गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ पवन कुमावत, योर मैथ्स टीचर। यस, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट some important questions of miscellaneous fifth of our NCERT textbook. I take a question here. If 1 plus iota upon 1 minus iota raised to power m is equal to 1, we want to find the minimum integer value of this m. Okay, 1 plus iota upon 1 minus iota raised to power m. How we can calculate it? First of all, rationalize it. So 1 plus iota upon 1 minus iota multiplied and divided by 1 plus iota, 1 plus iota. Is that clear? Now can we multiply them or simplify them? Yes. In denominator a minus b, a plus b, it is a square minus b square, identity. So here 1 plus 1, and in numerator a plus b whole square means a square plus b square plus 2ab raised to power m. Okay, now 1 to 1 cancel out, so we have 2 iota upon 2 raised to power m. Yes, is that clear? Now 2 to 2 cancel out, so we have only iota raised to power m, and this value given that is equal to 1. So if it is equal to 1, it is equal to 1, it is equal to 1, then iota raised to power m is equal to 1. Yes beta, we all know that iota raised to power multiple of 4, then it will be always 1. So we can say m is multiple of 4. Is that clear? M is multiple of 4 means m की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? m is equal to 4. Is that clear? m should be 4, 8, 12, 16, multiple of 4, but we want to calculate minimum integer value. Minimum integer value is 4. Okay then? Yes. And minimum integer value यहां पर इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू से है. ओके? यस बेटा, वी आर टेकिंग अनदर one of the most important question of miscellaneous fifth, and which is if a plus iota b, c plus iota d, e plus iota f and g plus iota h, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. यस, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर्स and it is equal to capital A plus iota capital B, and we have to show that a square plus b square, c square plus d square, e square plus f square, g square plus h square is equal to capital A square plus capital B square. It is a concept based question. Like we all know that property of complex number z1 into z2 modulus is always equal to z1 modulus into z2 modulus. ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में. तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग जो है यहां यूज ले सकते हैं. ओके, नाउ यूजिंग property, we have a plus iota b, c plus iota d,
E plus iota F, G plus iota H modulus. Okay? And here A plus iota B modulus. Then we can write it by this property: A plus iota B modulus, C plus iota D modulus, E plus iota F modulus, and G plus iota H modulus. It is A plus iota B modulus. And we all know that modulus of this is equal to in square root A square plus B square. It is in square root C square plus D square. And it is in square root E square plus F square and G square plus H square. It is equal to A square plus B square in square root. Is that clear? Now, squaring both the side, then we get A square plus B square, C square plus D square, E square plus F square, G square plus H square is equal to A square plus B square. Hence proved. Yes बेटा, हमें केवल प्रॉपर्टी लर्न रखनी है. Modulus of Z1 into Z2 is equal to modulus of Z1 into modulus of Z2. Is that clear? Simple सा क्वेश्चन था. Yes, we are taking another question, which is find the numbers of roots of equation 1 minus iota raised to power x is equal to 2 raised to power x. तो यहां हमारे को नंबर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने हैं कि इस इक्वेशन पॉजिटिव रूट्स कितने हो सकते हैं. फॉर दैट 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर गिवन x is equal to 2 raised to power x. Yes, for finding the number of roots, we can take only modulus. Yes, so 1 minus iota modulus raised to power x, 2 modulus raised to power x. What is the modulus of this complex number? It is in square root 1 plus 1 x, 2 raised to power x, because modulus of 2 is always 2. So it is under root 2 raised to power x, 2 raised to power x. Yes, it is 2 raised to power x by 2. It is 2 raised to power x. Yes, it is cannot be possible. So, number of roots of this equation is 0. Okay, number of roots of given equation is 0. Yes beta, it is most important question of our NCERT book. Okay? Yes, question is if alpha and beta are two different complex numbers where modulus of beta is 1, then find the value of this complex number. Yes, दिखने में ये क्वेश्चन टिपिकल है, लेकिन हम लोग इसको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. यस बेटा. सो हियर डू यू नो अबाउट कॉन्जुगेट? लाइक इफ z is equal to a plus iota b, then conjugate of this a minus iota b and conjugate of z1 plus z2 can be written as z1 bar plus z2 bar, means conjugate of z1 plus conjugate of z2. And z into z bar is always equal to mod of z square. Okay,
So with the help of these properties we can calculate the value of this complex number. Okay, let us start. Yes, first of all we using this property here, beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta, and beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta बार. हमने क्या किया बेटा, ये कंडीशन और इसका कॉन्जुगेट ले लिया. एक कॉन्जुगेट का मतलब बार. तो ये वैल्यू और इसके कॉन्जुगेट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसका मॉडुलस हो सकता है ना, कैलकुलेट हो सकता है इसका मॉडुलस. सो वी आर टेकिंग ओनली दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दिस. हम इसको जो है स्मॉल ब्रैकेट से शो कर रहे हैं. ओके, दिस इज नॉट अ मॉडुलस, दीज आर स्मॉल ब्रैकेट्स. अब देखो इस कंडीशन को इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सोल्व करेंगे लाइक दिस, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, एंड इट इज बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन, यहां पे भी भाई ये यूज आएगा, सो 1 माइनस अल्फा बीटा बार, क्योंकि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा, सेम टर्म आती. नाउ वी कैन मल्टीप्लाई देम, सो इट इज बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा एंड प्लस अल्फा अल्फा. सिमिलरली इन डिनोमिनेटर 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार. Is that clear? Now beta beta bar, here beta beta bar have a condition, modulus of beta is equal to 1 and beta beta bar is equal to of modulus of beta. So we can put here and here like this, modulus of beta square minus alpha beta bar minus alpha bar beta plus alpha alpha bar, and here 1 minus alpha bar beta minus alpha beta bar plus alpha alpha bar and modulus of beta square. And what is the value of modulus of beta square? It is 1. So 1 minus alpha beta bar minus alpha bar beta plus alpha alpha bar and upon 1 minus alpha bar beta minus alpha beta bar plus alpha alpha bar. Okay, and it is equal to 1. So value of this will be 1. Is that clear? टिपिकल सा क्वेश्चन दिखने में था, लेकिन प्रॉपर्टीज अगर हमारे को लर्न होगी, कॉन्सेप्ट हमारे को मालूम होगा तो इजीली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. यस बेटा, यूज इक्वल टू सिंबल्स आल्सो. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x minus iota y into 3 plus 5 iota means product of two complex numbers is conjugate of this complex number, then find the value of x and y. कहने का मतलब ये है, there are product of two complex numbers and resultant of this is conjugate of this complex number, then we find the value of x and y. Okay, क्वेश्चन को थोड़ा समझो. अगर हमारे पास इस नंबर का कॉन्जुगेट ये नंबर है तो कहने का मतलब ये हो गया इसका कॉन्जुगेट भी तो ये होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर. सो कॉन्जुगेट ऑफ -6 minus 24 iota is -6 plus 24 iota. तो जब इसका कॉन्जुगेट ये हो गया तो ये किसके इक्वल होना चाहिए,
this is equal to this. So we equate this to this number. Okay, सिंपल सा इसको इक्वेट करना है, लाइक x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24 आयोटा. इज दैट क्लियर? अब सिंपल सा ये इक्वेशन बन गया. वी कैन कैलकुलेट इट. यस, दिस इज प्रोडक्ट. ओके, सो वी कैन ट्रांसफर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द ट्रांसपोजिशन. सो x minus iota y is equal to minus 6 plus 24 iota upon 3 plus 5 iota. Yes, we can calculate it, rationalize it. For rationalization, we take conjugate of denominator term like this: 6 plus 24 iota 3 plus 5 iota multiplied and divided by 3 minus 5 iota, 3 minus 5 iota. We can multiply it. Yes, it is 9 plus 25. And in numerator, minus 18 plus 120 and plus 72 iota and plus 30 iota. Can we calculate it? Yes, it is 34 and this is plus 102 iota and 102. Is that clear? Can we simplify them? Yes, it is 34 3 jar. So 3 plus 3 iota, which is equal to x minus iota y. Therefore, x is equal to 3 and y is equal to minus 3. Yes, that is our answer. Okay, so these are some most important questions of our NCERT book. We should practice them. Yes? Okay, thank you, Bada. Thank you.